Yashodanandana Radhanarandana Yashodanandana Radhanarandana Yamunadhira Vanadhare Yamunadhira Vanadhare Jayadhamadhavachandra Vihari Abhijnanavavabhagirivaradhari Yashodanandana Prajananarandana Yashodanandana Prajananarandana Yamunadhira Vanadhare Yamunadhira Vanadhare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Madhava Jai Hare Govinda Rama Hare Hare. Yashodanandana Brajajanandana Yamuna Vida Anatane Randra Srimad Bhagavad Gita ki Srila Prabhupada ki, all glories to the assembled devotees. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Today we are reading Srimad Bhagavad Gita, chapter 10, The Opulence of the Absolute, text 10. तो हम पढ़ रहे हैं अध्याय 10, अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य, श्लोक संख्या 10। Tesham sadata yuktana Tesham sadata yuktana Dadami buddhiya Vajjatam pritipurvakam Vajjatam pritipurvakam Dadami buddhiyogam tam Adami buddhi yogam tam Yena mam upayanti te Yena mam upayanti te Tesham sadata yuktanam Vajjatam pritipurvakam Adami buddhi yogam tam Yena mam upayanti te. तो ट्रांसलेशन का प्रॉपर की जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तात्पर्य इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूँ और अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं और यही उत्तम बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि और योग का अर्थ है योगिक गतिविधियां अथवा यौगिक उन्नति। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग वह विधि है जिससे मनुष्य भव बंधन से छूटना चाहता है। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। लोग इसे नहीं जानते, अतः भक्तों तथा प्रामाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य है और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पद पर मंद गति से प्रगति करने पर भी
अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। जब मनुष्य लक्ष्य को जानता है किंतु कर्म फल में लिप्त रहता है तो वह कर्म योगी होता है। यह जानते हुए कि कृष्ण लक्ष्य है, जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो वह ज्ञान योग में लीन होता है। किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है तो वह भक्ति योगी या बुद्धि योगी होता है, और यही पूर्ण योग है। यह पूर्ण योग ही जीवन की सिद्ध अवस्था है। जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संग से संबद्ध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, तो कृष्ण उसके अंतर में उपदेश देते हैं जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके। इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह यह है कि कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। उसे कृष्ण के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए, किंतु प्रेम पूर्वक। यदि भक्त बुद्धिमान इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके, किंतु यदि वह एकनिष्ठ रहकर भक्ति कार्यों में रत रहता है तो भगवान उसे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाएगा। Om Jnanathimmirandhasya Gyananjana Salakaya Chaksuram Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuddhapada Kamalam Sri Gurun Vaishnavam Sha Sri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatanvitam Tam Sajivam Sarvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radha Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutadevi Pranamami Haripriya Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavyo Namo Namah Namah Om Vishnu Padaya Krishna Vishnaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Sinamne Namaste Saraswati Deve Gauravani Bracharine Nishasa Sundavari Pasyatyada Sadharine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasri Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhagavad Gita is a very important book of knowledge. भगवद गीता ज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण किताब है। It has been translated to almost all languages of the world. इसको लगभग दुनिया की सारी भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है। For hundreds of years, people in different countries are studying Bhagavad Gita. तो सैकड़ों वर्षों से पूरी दुनिया में लोग भगवद गीता पढ़ रहे हैं। But unless Srila Prabhupada gave his Bhaktivedanta purport, nobody became a devotee by studying Bhagavad Gita. लेकिन जब तक प्रभुपाद जी ने अपने भक्ति वेदांत तात्पर्य को नहीं दिया, तब तक कोई भी भगवद गीता को नहीं समझ सका। But when Srila Prabhupada gave his purport,
Now millions of people becoming devotees. लेकिन जब प्रभुपाद जी ने अपना तात्पर्य दिया तो आज लाखों लोग दुनिया में भक्त बन गए। I have one friend, his name is Thakur Mahashaya Das. तो प्रभु जी के एक मित्र है जिनका नाम है ठाकुर महाशय दास। In 1991, he was on the last year of his studies in the university. 1991 में वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। And he was reading many books. और वो बहुत सारी किताबें पढ़ रहे थे। He read maybe 1,000 books. कम से कम 1000 किताबें उन्होंने पढ़ी। And he came to the conclusion that life does not have any purpose by reading all these books. और इतनी सारी किताबों को पढ़कर के उन्होंने इस निष्कर्ष में पहुंचे कि जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। So he made a phone call to his father and he said, I came to the final conclusion, this life does not have any purpose. और फिर उन्होंने अपने पिताजी को फोन किया और बोला कि जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं है। So you will not see me again. और इसलिए आप मुझे अब कभी भी नहीं देखोगे। Next day he was walking in the students' campus. अगले दिन वो जा रहे थे स्टूडेंट कैंपस में। He came to an announcement board and he saw an announcement. Bhakti Yoga, Purpose of Life. Speaker, His Holiness Prabhavishnu Swami. तो फिर अगले दिन जा रहे थे एक अनाउंसमेंट एडवर्टाइजमेंट लिखा और उसमें लिखा था कि भगवद गीता पर्पस ऑफ लाइफ, भक्ति योगा पर्पस ऑफ लाइफ लेक्चर का नाम था और स्पीकर है प्रभु विष्णु स्वामी जी महाराज। He decided to go to have a dispute with him. I will prove to him that there is no purpose of life. तो उन्होंने निश्चय किया मैं इनसे जाके वाद विवाद करूंगा और उनको प्रूव करूंगा जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। He came to the class and it was very convincing. और क्लास में आए और उनको बहुत अच्छा लगा क्लास में आने के बाद। After the class, devotees were giving out sweet balls, so he took one sweet ball, second sweet ball. और फिर क्लास के बाद सबको प्रसाद दिया गया, मतलब रसगुल्ला दिया गया और फिर उन्होंने रसगुल्ला खाया। And after the third sweet ball, he was completely convinced. और रसगुल्ला खाने के बाद तो बच्ची कुछ जो कसर रह गई थी वो पूरी हो गई, पूरे तरीके से कन्विंस हो गए। And he bought a Bhagavad Gita. और फिर उन्होंने भगवद गीता खरीद ली। For 7 days he was reading, he was not eating, not sleeping, only reading Bhagavad Gita and finished Bhagavad Gita in 7 days. और फिर 7 दिन तक बिना खाए पिए तक लगातार भगवद गीता पढ़ रहे थे और फिर उन्होंने 7 दिन में पूरी भगवद गीता कंप्लीट कर ली। After that he made a phone call to his father. He said, I found the goal of life, so tomorrow I am coming back to your home. तो फिर उन्होंने फिर से पिताजी को फोन किया और बोला कि मैंने जीवन का उद्देश्य जान लिया और मैं कल वापस आ रहा हूँ। So his father was very amazed. He was 60 years old, but he did not found a goal of life, and his son found goal of life just in 7 days. तो उनके पिताजी बड़े आश्चर्यचकित थे कि मैं 60 साल का हो गया हूँ लेकिन मुझे जीवन का उद्देश्य पता नहीं चला, लेकिन मेरे बेटे को पता चल गया जीवन का उद्देश्य क्या है। 7 दिन में केवल उनको जीवन का उद्देश्य पता चल गया। So the father was very amazed, and when Thakur Mahashaya came back to home, so he asked him, what is the purpose of life? और फिर जब वो घर गए तो उनके पापा ने पूछा कि बताओ जीवन का उद्देश्य क्या है, बड़े उत्साह के साथ। And Thakur Mahashaya said, it's very simple. You should always chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. और उन्होंने उत्तर दिया, बेटे ने उत्तर दिया पिताजी को कि बहुत आसान है, बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। And for 1 year he was only reading Bhagavad Gita. और 1 साल तक वो लगातार भगवद गीता पढ़ रहे थे। He read Bhagavad Gita 10 times. और फिर 10 बार भगवद गीता पढ़ी। He started to chant 64 rounds. और फिर उन्होंने 64 माला जप करना शुरू कर दिया। And next year, 1992, we came to this island. He was staying in the island near Japan. Near Japan, there is a big island. It's called Sakhalin.
It's a Russian island next to Japan. And we came there to distribute books, 92. तो 1992 में जापान के पास एक आइलैंड है जिसको कहते हैं शहरी, तो वहां पर वो आए थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और महाराज उनको वहां पर मिले. We rented a flat in a big apartment house. और फिर एक फ्लैट किराए पे लिया एक बड़े से अपार्टमेंट में. Every day we were taking taxi and we were going around and distributing books. और फिर टैक्सी लेकर के राउंड एंड राउंड और किताबों को बांट रहे थे. But on Sunday we decided to go door to door in this house where we were staying. तो हर संडे को डिसाइड किया कि अब दरवाजे दरवाजे जाकर के सबको भगवद गीता देंगे. So at one flat we rang the bell. The man opened the door. He saw us and he said, "Please come in." और फिर एक दिन एक दरवाजे को गए, उसको खोला और एक व्यक्ति था, उसने वेलकम किया कि प्लीज कम इन, आप लोग अंदर आ जाइए. He said, I read Bhagavad Gita 10 times. और उसने बोला कि मैंने भगवद गीता में 10 बार पढ़ी. I am chanting 64 rounds. और मैं भी 64 माला जप कर रहा हूँ. I am so happy to meet you. मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलकर के. I never saw devotees. मैंने कभी भक्तों को नहीं देखा. मतलब भक्तों से कभी नहीं मिला था. So we had a very nice exchange, and we invited him to join Brahmacharya ashram in Moscow. और फिर बहुत अच्छा आदान प्रदान हुआ. फिर हमने उसको इनवाइट किया ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करने के लिए मॉस्को में. It takes a 9-hour flight from this island to Moscow. और फिर 9 घंटे की फ्लाइट थी उस आइलैंड से मॉस्को के लिए. Or 7 days by train. और जैसे 7 दिन लगते हैं ट्रेन से. So he joined Brahmacharya ashram in Moscow. और फिर ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन किया मॉस्को में. And for many years he is distributing Bhagavad Gita. और फिर वो कई सालों से भगवद गीता बांट रहे हैं. Bhagavad Gita is his favorite book. He read Bhagavad Gita 250 times. भगवद गीता उनकी सबसे पसंदीदा पुस्तक है और उन्होंने उसको 250 बार पढ़ लिया है. Every time I meet him, he is saying, "I finished to read Bhagavad Gita." हर बार वो मिलते हैं तो कहते हैं कि मैंने भगवद गीता कंप्लीट कर ली. But I could not stop. It's such a nice book, so I began again. लेकिन मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मैं फिर से दोबारा से शुरू कर दी. So he read Bhagavad Gita 250 times, but he is reading again. तो 250 बार पढ़ने के बाद भी वो बार उस किताब को फिर से पढ़ रहे हैं. So if you have not read Bhagavad Gita for 200 times, you have to read it again. अगर आपने 200 बार भगवद गीता नहीं पढ़ी है तो आपको फिर से इसको पढ़ना पड़ेगा. How many of you have read Bhagavad Gita 100 times? आप में से कितने लोगों ने भगवद गीता 100 बार पढ़ ली है? 50 times? 50 बार कितने लोगों ने पढ़ी है? 20 times? 20 बार कितने लोगों ने पढ़ी है? Oh, yes. Very nice. So you can continue to read again. तो इसलिए आप पढ़ना जारी रख सकते हैं. It's very deep book. ये बहुत गहरी किताब है. Just by reading one time, you can understand maybe 5%. एक बार में पढ़ेंगे तो आपको 5% समझ में आएगा. If you read 20 times, maybe you have understood 50%. अगर 20 बार पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको 50%. So you can continue to read again and again. इसलिए लगातार पढ़ते रहिए. And there are some important shlokas. ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण श्लोक हैं. Like this shloka is describing Buddhi Yoga. जैसे ये वाला श्लोक जो हमने पढ़ा इसको बुद्धि योग कहते हैं. If one is sincerely serving Krishna, Krishna is giving him intelligence. अगर कोई गंभीरतापूर्वक भगवान को सेवा कर रहा है तो भगवान उसको बुद्धि देते हैं. Everyone has intelligence. सबके पास बुद्धि होती है. But to come back to Godhead, you have to have a special type of intelligence. लेकिन भगवान के धाम जाने के लिए आपको विशेष प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता होती है. And this intelligence is coming from Krishna. ये बुद्धि जो है भगवान कृष्ण से आ रही है. If you become surrendered to Him and serve Him with love and devotion, He will give you this type of intelligence. अगर आप भगवान को शरणागत होते हैं और उनको सेवा करते हैं, भगवान को इस प्रकार की बुद्धि देते हैं. That's why we have so many services. इसलिए हम इतनी सारी सर्विसेज रखते हैं.
We have deity service. हमारे पास विग्रह की सेवा है. Somebody is doing puja, some is sewing garments, some making the ornaments. कोई पूजा कर रहा है, कोई माला बना रहा है, कोई आभूषण बना रहा है. So many services to cook for the deities. तो इतनी सारी सेवा है जैसे भगवान के लिए भोग बनाना. Krishna likes to eat. कृष्णा को खाना अच्छा लगता है. So we can cook for him the best preparations. तो हम भगवान के लिए बना सकते हैं सबसे बढ़िया क्वालिटी के प्रिपरेशंस. In Moscow on Janmashtami, devotees are cooking 1,108 preparations for Krishna. तो महाराज बता रहे हैं कि जन्माष्टमी पे मॉस्को में 1108 प्रिपरेशंस बना के भगवान को ऑफर करते हैं. Devotees, they want very much to satisfy Krishna. तो भक्त लोग भगवान को बहुत संतुष्ट करना चाहते हैं. So they are always thinking, what else can I do to satisfy him? तो हमेशा सोचते रहते हैं कि मैं कृष्ण को खुश करने के लिए और क्या कर सकता हूँ. Devotee is never thinking, I did so much, now Krishna is completely pleased, so I will not do anything anymore. तो आप ऐसे नहीं सोचता कि मैंने बहुत कर लिया, बस कृष्ण की सेवा पूरी हो गई, अब मैं और कोई सेवा नहीं करता. No, he is always thinking, I am doing so less, so. भक्त हमेशा ये सोचता होता है कि मैं कितना थोड़ा सा कर रहा हूँ. Like His Holiness Gopal Krishna Maharaj. He is always absorbed with the thoughts how he can please Srila Prabhupada and Krishna. जैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज हमेशा यही सोचते रहते हैं कैसे मैं गुरु और कृष्ण प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर सकता हूँ. He is finishing one temple and beginning another temple. एक टेंपल पूरा होता है, दूसरा टेंपल का कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है. He never thinks that I built so many temples, now I can take rest. He is always thinking, I did nothing, I have to do more and more. And he always wants to offer to Srila Prabhupada's books. और वो प्रभुपाद जी को और सारी किताबें जो है ऑफर करना चाहते हैं, देना चाहते हैं. So he is printing books and he is inspiring devotees to distribute books. इसीलिए लगातार किताबें जो है प्रिंट करवाते रहते हैं और डिवोटीज को प्रेरणा देते हैं कि वो कैसे और ज्यादा से ज्यादा किताबों का वितरण करें. When he was a young devotee in New York, it's like 1973, 74. तो महाराज जब मिल रहे थे 1970 में न्यूयॉर्क शहर में, तो he had a job for the whole day. He was working, but in the evening he was going to bus stand and distributing books. महाराज पूरे दिन जॉब करते थे, लेकिन शाम के समय जॉब से आने के बाद वो बस स्टैंड में जाते थे, वहाँ पर किताबें बांटते थे. He was never thinking that I did enough. और कभी ऐसा नहीं सोचा उन्होंने कि बस मैंने बहुत कर दिया है. So this is the mentality of a devotee. He wants to please Krishna every day, more and more. तो ये भक्त की मानसिकता होती है कि भगवान को और प्रसन्न करना चाहता है हर रोज. Now we have a Gita marathon. तो अभी गीता मैराथन चल रहा है. Every devotee is trying to participate. तो हर भक्त जो है सेवा में लगने का प्रयास कर रहा है. Even if you can distribute one Bhagavad Gita, it will be your part. तो अगर एक भगवद गीता भी बांट पाते हैं तो इससे आपका गेन होगा, प्रगति होगी. Here in India you have so many relatives. यहाँ पर भारत में आपके इतने सारे रिश्तेदार हैं. Maybe 100 relatives. हो सकता है कोई 100 रिश्तेदार होंगे. So you can supply each relative with Bhagavad Gita. तो एक रिश्तेदार को एक भगवद गीता आप दे सकते हो. Also you have some neighbors. और आपके पड़ोसी भी होंगे बहुत सारे. Maybe some of these neighbors they don't have Bhagavad Gita. हो सकता है पड़ोसियों के पास भगवद गीता नहीं होगी. You have some friends. आपके कुछ मित्र होंगे. You have schoolmates with whom you were studying in the school. आपके स्कूलमेट्स होंगे जो आपके साथ स्कूल में पढ़ रहे होंगे. You have some teachers who was teaching you in the school. स्कूल के टीचर्स होंगे जो आपको कभी स्कूल में पढ़ाते होंगे. So you can supply everyone with the Bhagavad Gita. तो सबको आप जाके भगवद गीता दे सकते हो. And also we can go out
on the streets to distribute और Bhagavad हम Gita. सड़क में भी जा सकते हैं भगवद गीता बांटने के लिए. Every evening we are going with devotees to narrow place and chanting Harinam. और हर शाम में जाते हैं भक्त वहाँ पे नेहरू प्लेस में हरिनाम करते हैं. And few devotees, they are distributing books. और कुछ भक्त होते हैं वो किताब बांटते हैं. And every day some Bhagavad Gitas also are going out, some small books. तो हर रोज कुछ भगवद गीता जाती है, कुछ छोटी छोटी किताबें भी जाती हैं. So you can go out with your family members together, chant a little bit and distribute और आप books. परिवार के साथ बाहर जा सकते हो, थोड़ा कीर्तन कर सकते हो, भगवद गीता वितरित कर सकते हो. Some devotees, they are distributing on internet. कुछ भक्त इंटरनेट पे भगवद गीता बांट रहे हैं. One devotee in Russia, he organized a big online program this Gita Jayanti day. तो एक भक्त ने रशिया में ऑनलाइन एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया इस गीता जयंती के दिन पे. And he wants to distribute on this day, through this online program, he wants to distribute 10,000 Bhagavad Gitas in one day. और उनका प्लान है कि एक दिन में 10,000 भगवद गीता वो ऑनलाइन बांटना चाहते हैं. So on internet you can distribute millions of books. इंटरनेट पे तो आप मिलियंस ऑफ लाखों किताबें बांट सकते हो. Like we have in Russia a big internet shop, it's called Wild Berries. तो रशिया में एक इंटरनेट शॉप है, इसका नाम वाइल्ड पेरिस. And one devotee, he put Bhagavad Gita and other books on this shop. तो एक भक्त ने वहाँ पे जाकर भगवद गीता और भी सारी किताबें वहाँ पे रख दी. And last year he distributed 6,000 Bhagavad Gitas. और लास्ट ईयर जो है 6,000 भगवद गीता वहाँ से वितरित हुई है. So internet is very big space for book distribution. तो इंटरनेट में बहुत बड़ा स्पेस है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए. So there are many ways how to distribute the books. तो बहुत सारे तरीके हैं कैसे कैसे आप किताब बांट सकते हो. If we are sincere and we want to please Srila Prabhupada, Krishna will give us intelligence how to do this. अगर हम गंभीर हैं, हम गुरु और प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो भगवान हमको कृष्ण को बुद्धि देंगे. Maybe somebody has some questions. आप लोग कुछ क्वेश्चंस हैं? Hare Krishna Maharaj. Maharaj, please accept my humble obeisances that you notice me. Maharaj, my question is how you met our Guru Maharaj and what is your initial realization in Russia when you met Guru Maharaj, and what the most powerful realization of Guru Maharaj you will share here in this lecture. Hare Krishna Maharaj. Thank you. तो प्रश्न ये है कि आप पहली बार महाराज जी को कब मिले, रशिया में कैसे मिले, और फिर आपको क्या अनुभूति हुआ, क्या रियलाइजेशन हुआ महाराज को मिलने के बाद. So in 1989 I came to the first program of devotees and bought Bhagavad Gita. तो 1989 में मैं पहली बार प्रोग्राम में आया था और मैं भगवद गीता खरीदी. And next year, 1990, I joined Brahmacharya Ashram in Moscow. और फिर अगले ही साल 1990 में फिर मैंने ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन कर लिया. It was March of 1990, and Guru Maharaj came in May 1990. तो ये मार्च 1990 का महीना था जब मैंने ज्वाइन किया, और महाराज जो है मई 1990 में रशिया आए. Every day he was giving long classes. हर रोज महाराज लंबी क्लासेस दे रहे थे. Because devotees were very eager to hear from him, so his morning class was from 8 a.m. to 12. और भक्त लोग बहुत ईगर थे, बहुत उत्साहित थे महाराज से सुनने के लिए. तो क्लास जाती थी 8 बजे शुरू होती थी, सुबह 12 बजे तक. Because devotees had so many questions, they can ask questions for 3-4 hours. तो भक्तों के इतने सारे प्रश्न रहते थे कि भक्त लोग 3-4 घंटे तक पूछ सकते थे. Then was a break for lunch. उसके बाद फिर ब्रेक होता था लंच के लिए. And then from 3 p.m. to 7 p.m. evening class. फिर इवनिंग क्लास चलता था 3 बजे से लेकर 7 बजे तक. It was for like 5-6 days.
तो ऐसा लगातार 5-6 दिन तक चलता था। And at the end of his visit, he was given first initiation. और फिर उसी विजिट में महाराज ने पहला इनिशिएशन महाराज दिए थे। He accepted maybe 20 disciples. महाराज ने लगभग 20 शिष्यों को दीक्षा दी। And I became very inspired. और महाराज बहुत उत्साहित हुए, महाराज बहुत इंस्पायर्ड हुए। So I asked, can I also become initiated? तो महाराज ने गुरु महाराज को पूछा कि मैं भी क्या दीक्षा ले सकता हूँ? But the devotee said that you are only 2 months in the movement, so you have to wait. And after initiation, Guru Maharaj got sick, and for 4 days he was in the hospital. So he took 2-year break. He was not accepting more disciples for 2 years. He was coming to Russia like 6 times in a year. And he was giving 2, 3, sometimes 4 classes every day. He was giving classes in the temple, he was giving public classes, he was going to schools, colleges, so many classes. And he was inspiring everybody to take part in book distribution. In 1990, it was very easy to distribute books because people were very hungry spiritually. For 70 years, books about God were forbidden. But in 1990, everybody was allowed to read books about God. So everybody was looking, where is book about God? So you have to go out on the street and put the book like this. And people were coming closer and asking, is this book about God? Yes. So everybody was starting to buy a book. So you can distribute 500 books in few hours. It was very easy. So we were distributing books from 6 in the morning to 8 p.m. Then we started to put the tables. And people were standing in big queue to get the books. For half an hour they have to stand in the line. They were so eager to read books about God. And we had only 3 books, Bhagavad Gita, Krishna book, and Teachings of Lord Chaitanya. So everybody was buying 3 books. And Guru Maharaj was inspiring everybody to take part. He has got this instruction from Srila Prabhupada to print books and to distribute books and to build temples. And he is doing this all his life. And he is always
in this mentality that I have done nothing, I want to do more and more. महाराज हमेशा ऐसे ही सोचते रहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं और करना चाहता हूँ, और करना चाहता हूँ. So if somebody is helping him, he is very happy. अगर महाराज को कोई सहायता करता है तो महाराज बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं. And he always wants to serve devotees. और वो और हमेशा भक्तों को सेवा करना चाहते हैं. He's always saying, when you are coming to India, please call me. I will send a car to pick you up. हमारे हमेशा फोन करके पूछते रहते हैं, अब इंडिया कब आ रहे हो? जब इंडिया आओ तो मुझे give me a call, मुझे कॉल दो और मैं आपको कार I will arrange room for you. I will supply prasadam, everything. Just come. आपके लिए मैं रूम अरेंज करूंगा, प्रसाद अरेंज करूंगा, सब कुछ सारी व्यवस्था करूंगा. In 1992, we were distributing books in far east of Russia. तो 1992 में हम किताब बांट रहे थे रशिया के ईस्ट में. It's a Pacific Ocean coast. तो ये पैसिफिक ओशन है, मतलब प्रशांत महासागर है. The name of the city is Vladivostok. तो शहर का नाम है व्लादिवोस्तोक. And Guru Maharaj came there to give classes. महाराज वहाँ पर आए क्लास देने के लिए. So we immediately came to this city also. तो हम तुरंत उस शहर में पहुँचे. For 5-6 days he was giving classes. हमारे 5-6 दिन तक लगातार क्लासेस दे रहे थे. Then he had a flight back to Moscow. It's a 7 hours flight. और फिर महाराज ने दूसरी फ्लाइट ली वहाँ से मॉस्को के लिए 7 घंटे की फ्लाइट थी. He had a ticket, but we did not have a ticket. We were distributing books there. तो महाराज के पास टिकट था, लेकिन हम लोगों के पास टिकट नहीं था, तो किताब बांट रहे थे. But we decided we will come to airport. Maybe Krishna will send us some tickets. तो हमने सोचा चलो एयरपोर्ट पे चलते हैं, हो सकता है कृष्ण हमें कुछ टिकट्स भेज दें. We were praying very much to Krishna. और हम भगवान को प्रार्थना कर रहे थे वहाँ पर. And when we came to airport, there was an announcement that some people they have wrong tickets. They are out of the flight. You can come to the desk and buy tickets. तो वहाँ पर जैसे ही पहुँचे तो अनाउंसमेंट हो रहा था कि कुछ लोगों ने गलत टिकट खरीद ली है, इसीलिए आप काउंटर पर आ सकते हो और टिकट्स खरीद सकते हो. So we immediately ran and bought the tickets, and और हम तुरंत भागते हुए गए और हमने टिकट खरीद ली. and we were sitting in one row with Guru Maharaj. हम लोग सब एक ही लाइन में बैठे थे गुरु महाराज के साथ. And usually devotees are giving him a lot of prasadam for travel. और अक्सर भक्त लोग बहुत सारा प्रसाद देते हैं महाराज को जब ट्रैवलिंग करते हैं तो. So when the aeroplane came to the proper height, Guru Maharaj opened his lunch box. जब प्लेन आज प्रॉपर हाइट पे आ गया तो महाराज ने अपना लंच बॉक्स खोला. And he started to distribute prasadam to all the devotees. और फिर महाराज ने प्रसाद सारे भक्तों को बांटना शुरू कर दिया. He said, first I will serve devotees, then I will cook myself. महाराज ने कहा सबसे पहले भक्तों को प्रसाद खिलाऊंगा, फिर मैं खाऊंगा. Although in 92 we were just young devotees, only maybe 2 months after initiation. तो 1992 में हम सब नए ही भक्त थे, तो ज़्यादा 2 महीने हुए थे दीक्षा को. So his mentality is always to serve devotees. महाराज का हमेशा विचार रहता है भक्तों को कैसे सेवा करें. Any more questions? Devotees can ask questions. Hare Krishna Maharaj, my humble appreciation to your daughter's feet. Maharaj, my question is, how can we do attentively chanting? प्रश्न ये है कि कैसे ध्यानपूर्वक जप कर सकते हैं. Preparation starts from day before. तैयारी शुरू हो जाती है एक दिन पहले ही. So it's very important what we are doing in the evening before going to sleep. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम पिछले दिन शाम को क्या कर रहे हैं. Srila Prabhupada recommended evening program. श्रील प्रभुपाद जी ने रेकमेंड किया कि इवनिंग प्रोग्राम अटेंड करें. To take hot milk and to read Krishna book. और गर्म दूध पीकर आप कृष्ण बुक पढ़ सकते हैं. Also we can read Bhagavad Gita. और हम भगवद गीता भी पढ़ सकते हैं. And we can pray to Krishna, Krishna, I want so much to chant your names attentively. Please give me an intelligence. How can I do this?
और हम कृष्ण को प्रार्थना कर सकते हैं कि मैं ध्यानपूर्वक आपका नाम जप करना चाहता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे बुद्धि दीजिए. So at night we are sleeping and coming down to Tamaguna. रात में जब सो रहे होते हैं तो हम तमोगुण में आ जाते हैं. So in the morning we have to do something in order to become purified. तो सुबह उठकर हमें खुद को शुद्ध करना होता है. So cold water is in the mode of goodness. तो जो ठंडा पानी होता है वो सत्वगुण में होता है. It purifies the subtle body. तो ये हमारे शरीर को शुद्ध करता है. So we have to take bath. तो हमें सुबह स्नान करना चाहिए. To purify our subtle body. तो हमें अपने इंद्रियों और शरीर को शुद्ध करना चाहिए. Then we should wear fresh clothes. और फिर हमें नए कपड़े पहनने चाहिए. You have to put tilak. और फिर तिलक लगाना चाहिए. And we can offer prayers to the spiritual master. और फिर हम अपने गुरु को भी प्रार्थना कर सकते हैं. In the temple we are always chanting Guru Ashtakam. तो मंदिर में हम सुबह सुबह जैसे गुरु अष्टकम गाते हैं. We can do same at home. ऐसा ही हम घर पर भी कर सकते हैं. It's very important to get the mercy of a spiritual master. ये बहुत महत्वपूर्ण है गुरु की कृपा प्राप्त करना. Also we offer in prayers to Nrisimhadev. और हम नरसिंहदेव को भी प्रार्थना करते हैं. He is famous as Bhakti Vigna Vinashak. और नरसिंहदेव प्रसिद्ध है भक्ति विनाशक के रूप में. He is destroying all the obstacles on the path of Bhakti Yoga. भक्ति योग के पंथ में सारी बाधाओं को दूर करते हैं. And also we can offer prayers to Tulasi Devi. और हम तुलसी जी को भी प्रार्थना कर सकते हैं. Tulasi is very dear to Lord Krishna. तुलसी जी भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है. And she can fulfill any spiritual desire. और वो हमारी कोई भी आध्यात्मिक इच्छा को पूरा कर सकती है. So we can pray to Tulasi that please allow me to chant Krishna's name very attentively. हम तुलसी जी को प्रार्थना कर सकते हैं कि कृपा करके हमें आशीर्वाद दें, भगवान का नाम ध्यानपूर्वक कर सकें. And then we can take our beads and chant. और उसके बाद फिर हम माला ले सकते हैं और जप करना शुरू कर सकते हैं. Any questions? Please accept my following Maharaj. While preaching, I came across one of the person. He was initiated disciple, and he shared one of the instances from his life. He said that because some death happened in his life, in his family, and he got depressed. He was initiated, but he left his chanting for a few months. And then he asked that what he should do now. And he suggested that you should go and repeat your heart, and then start chanting again. But I'm not sure what should I have suggested him. He should come to the devotees. तो प्रश्न ये कि एक भक्त है दीक्षित है, लेकिन उनके परिवार में किसी करीबी की मृत्यु हो गई और उसके बाद फिर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए. तो उन्होंने माला भी छोड़ दी कुछ महीनों के लिए. तो सवाल ये है कि उन्होंने सजेस्ट किया कि आप जाओ गुरु महाराज से मिलो, दोबारा से जब शुरू करो. सवाल ये कि क्या सजेशन लेना चाहिए ऐसी परिस्थिति में अगर ऐसा होता है. Many people they start chanting but then they stop. बहुत सारे लोग होते हैं जब करना शुरू करते हैं लेकिन बाद में छोड़ देते हैं. Because in the material world everything is against chanting. क्योंकि भौतिक संसार है, हर चीज जो है जब के विरुद्ध है. Only few people are chanting. वो कुछ ही लोग होते हैं वो लगातार चैंटिंग कर रहे होते हैं. 99% of the people they are not chanting Hare Krishna. 99% लोग हैं वो हरे कृष्ण चैंटिंग नहीं कर रहे हैं. And they are trying to convince us you don't have to chant what is. और हमें भी वो कन्विंस करने का प्रयास करते हैं कि आपको जप करने की आवश्यकता नहीं है. Or some incident happens and because of this. और हमारे परिवार में कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई इसके कारण. So when we have some difficulties we have to go to devotees.
तो जब हमारे जीवन में कोई समस्या है तो हमें भक्तों के पास जाना चाहिए. If we keep to the association of devotees, we will be always inspired to chant. अगर हम भक्तों के संग में खुद को रखते हैं तो हमेशा उत्साहित रहेंगे जप करने के लिए. So he has to come back to the devotees and start chanting again. तो हमें भक्तों के पास दोबारा से वापस आना चाहिए, दोबारा से जप करना शुरू कर देना चाहिए. हरे कृष्ण महाराज. Hare Krishna. मैंने क्वेश्चन था सर. मैं ना 2 साल पहले मैंने इलेक्ट्रिसिटी कर लिया था रिश्तेदार कर लिया था 2 साल पहले. तो वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने मुझे कुछ गलत चीज खिला दी. तो मुझे 2 साल हो गए निकल नहीं रहा है, मतलब सर में दर्द रहता है. जिस समय नहीं आ रहा उसको मेडिसिन से भी सही नहीं हो पा रहा. 2 साल से सेक्रेटरी की दवाइयाँ खा रहा. तो मैं चाह रहा था बिना दवाइयों के मेरा इलाज हो जाए. The question is that he went to his relative's house and they made him eat some wrong thing, and due to that wrong thing he is continuously having a headache for I think 2 years. Those are he is having a headache for 2 years, and now he is a psychiatrist taking medicines, but it's not working. So it's like asking what should he do? The best medicine is Hare Krishna mantra. तो सबसे अच्छी दवाई है हरे कृष्ण. Krishna is in everyone's heart as super soul. तो कृष्ण सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा के रूप में. So he is controlling everything. तो भगवान सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं. So we have to chant, we have to have devotee association. तो हमें जप करना होगा और भक्तों का संग लेना होगा. And also we can take some treatment. और साथ ही साथ हम कुछ ट्रीटमेंट ले सकते हैं इसके साथ साथ. Srila Prabhupada, he said that he is maintaining his health by 3 things. तो प्रभुपाद जी कहते हैं मैं अपने स्वास्थ्य को 3 चीजों से मेंटेन रखता हूँ. Massage, फर्स्ट इज मसाज, बॉडी मसाज. Ayurvedic medicine, और दूसरा आयुर्वेदिक मेडिसिन. and walking. और थर्ड इज वॉकिंग. So we can also do this. तो ये 3 चीजें भी हम कर सकते हैं. Because sometimes headache is because of some problem with the bones in the neck. तो कई बार जो होता है सर दर्द होता है, कुछ नर्व्स होते हैं जो कि नेक के पास, गर्दन के पास होती है, उनकी वजह से. So you can approach some person who knows how to deal with the bones. तो हम किसी एक्सपर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं जो जानता है कि बोन्स के साथ कैसे डील करना होता है. It can help. तो इससे हो सकता है हमें सहायता मिले. But most important is to chant Hare Krishna. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है हरे कृष्ण जप करना. Because Krishna is in control. तो कृष्ण ही नियंत्रक है. Hare Krishna. Hare Krishna. Please accept my humble obeisance to Maharaj. My question is, I have one friend, and in past there are so many things, like he was involved in some bad habits, and he did some like the wrong things in the past. Now he is not in those situations. But when I invite him to any lecture, any program, any spiritual activities, anywhere, any camp, so he is afraid that I have to reveal all those things, and you may be asked those things in front of the devotees and the society, that I have to face those situations again, and I don't want to reveal, I don't want to face, I don't want to express those things again in the present or the future. So how I should convince him that I will not ask anything from the past, and you don't have to express those things again. How I can convince? तो प्रश्न ये है कि हमारे एक मित्र हैं और उनकी कुछ पुरानी बुरी आदत थी, और वो बुरी आदत से बाहर निकल गए और ठीक हो गए. जब भी हम उनको किसी भी स्पिरिचुअल प्रोग्राम के लिए बुलाते हैं
और किसी भी कैंप्स के लिए लेक्चर्स के लिए बुलाते हैं तो वो यही कहते हैं कि मैं जाऊंगा तो मुझे वो सारी चीज़ें जो मैंने की, जो गलत चीज़ें मुझसे हुई हैं, उनको भक्तों को रिवील करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, तो वे वो नहीं करना चाहता। Devotees, कैसे उनको इनवाइट करें? so devotees, they have to be sensitive to new people. तो भक्तों को संवेदनशील होना चाहिए नए लोगों के लिए। You should not push them that you have to tell everything now. और वे लोगों को पुश नहीं करना चाहिए, आपको सब कुछ बता देना है पहले ही। If a person is afraid to go to the devotees, they can go to him. अगर कोई व्यक्ति है वो भयभीत है भक्तों के पास आने से, तो भक्तों को उसके पास जाना चाहिए। You can organize some program in his house or in your house to invite him. कुछ प्रोग्राम आप कर सकते हैं, उन्हीं के घर में कर सकते हैं, या फिर आप उनको अपने घर में बुला सकते हैं। Because some people, they are afraid to go to the temple. तो कुछ लोगों को भय रहता है मंदिर जाने के लिए। But it's easy for them to go to the friend's house. लेकिन उनके लिए आसान रहता है अपने किसी मित्र के घर जाना। So you can organize spiritual program in your house and invite him. इस तरीके से आप प्रोग्राम कर सकते हैं अपने घर में और उनको इनवाइट कर सकते हैं। You can have some regular program at your home. आप नियमित रूप से कुछ प्रोग्राम कर सकते हैं अपने घर में। Srila Prabhupada is saying in one purport in Chaitanya Charitamrita, chapter 4, that devotee grihasthas, they have to regularly invite devotees to their house to have kirtan for 3 hours, to have prasadam, some discourse on Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत के अध्याय 4 में बताते हैं कि भक्तों को, दूसरे भक्तों को अपने घर में बुलाना चाहिए और 3 घंटे कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन के बाद कुछ भगवद गीता या भागवत के ऊपर प्रवचन होना चाहिए और फिर सबको प्रसाद वितरण करना चाहिए। So it's very important to have programs in the house. ये बहुत महत्वपूर्ण है हाउस प्रोग्राम्स करना अपने घर में। If devotees are not coming to this house, it's house like some material place. अगर भक्त लोग आपके घर में नहीं आ रहे कीर्तन करने के लिए, तो आपका घर किसी भौतिक स्थान के जैसा ही है। But when devotees are coming to the house, they have kirtan, they have some discourse, and this place is becoming purified and spiritualized. लेकिन जब भक्त लोग आपके घर में आते हैं, कुछ कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, आपका घर जो होता है आध्यात्मिक हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। So it's important for devotees householders to invite devotees to their house. तो गृहस्थ भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है कि अपने भक्तों में, अपने घर में भक्तों को बुलाएं। To have kirtan, prasadam, कीर्तन करें, प्रसाद आयोजित करें, discussion of Bhagavad Gita. भगवद गीता पर चर्चा करें। Hare Krishna. Hare Krishna. Please and my notices. Maharaj, in Sri Odessa, Srila Prabhupada said that first of all we have to control our senses and mind. Only then spiritual things will be revealed. But in practical terms, we see that we find it very, very difficult to control the tongue and lusty desires. So because of that, it only happens as the Prabhupada said in the first chapter, that like an elephant. So we are moving in that trap only. How we can get out of it, Maharaj, so that we can serve Srila Prabhupada. प्रश्न है कि उपदेशामृत में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि बिना मन और इंद्रियों को नियंत्रित करे बिना आध्यात्मिक विषय जो है प्रकट नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं कि 2 चीजों को नियंत्रित कर पाना बहुत मुश्किल है, वो है जीवा और लस्टी टेंडेंसीज को। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? How to control the mind and senses. मन और इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करें? The best way to control mind and senses to be always engaged in devotional service. सबसे अच्छा तरीका है मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहना। So Srila Prabhupada gave us so many services. तो प्रभुपाद जी ने बहुत सारी सेवाएं जो हैं हमें दी है। We can be engaged 24 hours a day. हम लोग 24 घंटे सेवा कर सकते हैं। And especially during the Prabhupada marathon, we have
this wonderful service of book distribution. और विशेष तौर से ये प्रभुपाद मैराथन का जो महीना चल रहा है इसमें हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं. Somebody can go directly to distribute books. कोई डायरेक्टली जा सकता है पुस्तक वितरण करने के लिए. Somebody can help devotees to carry the books. कोई सहायता कर सकता है किताबें ले जाने के लिए. Somebody can cook prasadam for those who are distributing कुछ books. लोग भक्तों के लिए जो किताब बांटने जा रहे हैं उनके लिए प्रसाद बना सकते हैं. Somebody can take care of children of those devotees who want to go out. कुछ लोग हैं वो उनके भक्तों के बच्चों को टेक केयर कर सकते हैं ताकि वो भक्तों को किताब बांट सके. In some places, like one lady, she's taking all the children to her home, taking care of them, and the others they are going and distributing books. कुछ स्थानों में एक माता जी रहती है, सारे बच्चों को टेक केयर करती है और फिर बाकी सारे भक्त जो होते हैं किताब बांटने के लिए जाते हैं. Somebody can sponsor the books. कुछ लोग किताबें स्पॉन्सर भी कर सकते हैं. Somebody can distribute sponsored books to some. कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग स्पॉन्सर्ड किताबों को दूसरे लोगों को बांट सकते हैं. So many services. तो इस प्रकार से बहुत सारी सेवाएं हैं. And when we are busy our mind is completely absorbed in the service, we don't have any problem to control the mind. तो जब हम व्यस्त रहते हैं, हमारा मन व्यस्त रहता है, तो हमें कोई समस्या नहीं आती मन को नियंत्रित करने में. So we have to be always engaged in the service. हम हमेशा सेवा में लगे रहना चाहिए. Hare Krishna Maharaj, Pranam. Please accept my humble obeisances unto your lotus feet. Thank you so much, Maharaj, for this wonderful lecture and for sharing your experience following Krishna consciousness. Prabhuji, we all know, in Russia it was very difficult to follow Krishna consciousness in the initial years. So, can you share your experience while you face so many difficulties in preaching or following Krishna consciousness? Thank you, Prabhu. प्रश्न है कि इनिशियली के जो सब प्रारंभ के दिन थे रशिया के अंदर, उस समय वहाँ पे भक्ति कर पाना बहुत मुश्किल था. तो उसमें उन दिनों में आपने कैसे किया, उससे रिलेटेड आप अपना जो अनुभव है वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं. At the initial stage, in the 80s, devotees faced so many difficulties. तो प्रारंभ के दिनों में भक्तों ने बहुत संघर्ष किया, बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया. In the 70s, there were no difficulties because there were just few devotees. तो 1970 में कोई समस्या नहीं थी क्योंकि बहुत थोड़े से ही भक्त थे. Srila Prabhupada gave initiation to 2 devotees. प्रभुपाद जी ने 2 भक्तों को दीक्षा दी थी. And few devotees joined, so they did not have any difficulty. तो उनके साथ कुछ और भक्तों ने फिर ज्वाइन किया, तो उस समय तो कोई समस्या नहीं थी. But then big preaching started. लेकिन उसके बाद फिर बड़ा प्रचार शुरू हुआ. 1976, His Holiness Gopal Krishna Maharaj, he came to Moscow with books. 1976 में परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज आए वहाँ पर अपनी किताबों को लेकर. He distributed first sets to libraries. और हमें फिर किताबों को देना था लाइब्रेरीज में. Then 1977 he came for the first international book fair in Moscow. 1977 में महाराज आए पहले इंटरनेशनल बुक फेयर फेस्टिवल के लिए. He brought many books. और बहुत सारी किताबें लेकर के आए. And many Russian scientists, they gave very nice review for Srila Prabhupada's books. और बहुत सारे रशियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रभुपाद जी की किताबों के लिए रिव्यूज दिए, बड़े अच्छे रिव्यूज थे. In October of 77, he brought these reviews to Srila Prabhupada. 1977 अक्टूबर में वो रिव्यूज थे, वो लेकर के महाराज गए प्रभुपाद जी के पास. Although Srila Prabhupada was preparing to leave this world in October, it was his last month. तो उस समय अक्टूबर के महीने में प्रभुपाद जी भगवत धाम जाने की तैयारी कर रहे थे. आखिरी महीना था प्रभुपाद जी. He was showing this review to everyone who was coming to visit him. See, the Soviet Union accepted our books. तो प्रभुपाद जी सबको जो भी मिलने के लिए आ रहे थे उनको दिखा रहे थे, देखो सोवियत यूनियन ने हमारी जो किताबों को एक्सेप्ट कर लिया. He was so happy. प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न थे. Then in 78, after Srila Prabhupada's departure, Kirtiraj Prabhu and Harikesh Swami, they became GBC for
Russia. और फिर प्रभुपाद जी के जाने के बाद सन 1978 में कीर्तिराज प्रभु और हरिकेश स्वामी जो थे वो BBC हो गए रशिया के. And they started to travel all around Soviet Union, और फिर पूरे सोवियत यूनियन में उन्होंने ट्रैवल करना शुरू किया. giving many classes. और बहुत सारी क्लासेस दे रहे थे. Many devotees started to join. बहुत सारे भक्तों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया. So in 79 it was quite a big crowd of devotees. 1979 तक बहुत सारे भक्त हो गए. So in 1980 the government started to worry about this. तो 1980 में फिर गवर्नमेंट बहुत परेशान होने लगी. So during the public programs they arrested Harikesh Swami and Kirtiraj Prabhu. और फिर एक पब्लिक प्रोग्राम में उन्होंने हरिकेश स्वामी और कीर्तिराज प्रभु को अरेस्ट कर लिया. They put them into the flight to Europe. और फिर उन्होंने फ्लाइट में बैठाया जबरदस्ती उनको यूरोप भेज दिया. And military aeroplane was following them up to the border. और एक मिलिट्री एयरप्लेन में भेजा एस्कॉर्ट करने के लिए उनको बाहर निकाल के आओ. In case they would want to drop. अगर वो वापस आना चाहे तो उनको रोकने के लिए. So it was, and then persecution started. और उसके बाद फिर अत्याचार शुरू हुआ. They started to arrest devotees, और फिर भक्तों को गिरफ्तार किया जाने लगा. put them into jail, वो जेल में डाल देते थे. to mental hospital, कुछ मानसिक अस्पताल में डाल देते थे. making very strong injections that they were becoming crazy of these injections. और इंजेक्शन दे रहे थे उनको जिससे वो पागल हो जाए. So it was a very difficult time. ये बहुत कठिन समय था. But even at that time, devotees started to print the books underground. और लेकिन उस समय में भक्तों ने किताबें प्रिंट करना था अंडरग्राउंड शुरू कर दिया. One devotee, he managed to buy a printing press. एक भक्त ने प्रिंटिंग प्रेस खरीदी. It was illegal, like 20 years into jail if you have a private printing press. 20 सालों की सजा थी अगर कोई आपके पास प्रिंटिंग प्रेस मिलती है तो. But he made very special trick and he got this. लेकिन भक्त ने बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके ट्रिक करके प्रिंटिंग प्रेस अरेंज कर ली. It was also impossible to buy paper. और उस समय ये असंभव था कि पेपर खरीदना. So he had to make a trick to buy a big amount of paper. तो उसके लिए उन्होंने ट्रिक किया और बहुत बड़ा अमाउंट पेपर खरीद लिया. And he started to print books. और फिर उन्होंने किताबें छापना शुरू कर दिया. He printed 1,000 copies of Sri Upanishad in Russian. 1000 रशियन कॉपीज उन्होंने छापी ईशोपनिषद की. And they were distributing them very cautiously. और बड़े सावधानीपूर्वक उनको वितरित कर रहे थे. Then he printed Krishna book. उसके बाद फिर कृष्णा बुक प्रिंट हुई. Then in 1986, His Holiness Gopal Krishna Maharaj, he found a sponsor and he printed in Mumbai like 10,000 copies of Russian Bhagavad Gita and Krishna book. तो फिर परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को भी स्पॉन्सर मिला और उन्होंने 10,000 भगवद गीता और कृष्णा बुक जो है वो रशियन में प्रिंट की. It's a famous devotee, Srinathji Prabhu from Mumbai. मुंबई के बहुत प्रसिद्ध भक्त हैं श्रीनाथ जी प्रभु. उन्होंने ये दान दिया. He left the body last year, I think so. उन्होंने शायद पिछले साल ही शरीर छोड़ा है. He was the sponsor who paid for the Russian books. तो उन्होंने रशियन जो बुक्स थी उनको उनके लिए दान दिया. And devotees were distributing this book to Russian tourists. भक्त लोग इनको रशियन टूरिस्ट को ये किताबें बांट रहे थे. Because it was impossible to bring them to Russia. क्योंकि ये असंभव था उसको रशिया के अंदर लेकर के आना. And there was one Mataji group, एक माता जी का ग्रुप था वहाँ पर. Srila Prabhupada disciples. वो प्रभुपाद जी के शिष्याएं थी. They were secretly going to Moscow. वो छुप छुप के जाते थे मॉस्को में. They had special dress उनके पास एक स्पेशल तरीके का ड्रेस था. with 40 pockets inside. उसके अंदर कई सारे पॉकेट्स 40 पॉकेट होते थे उसके अंदर.
And they were crossing the border with the books inside their clothes. और वो बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आ जाते थे, उनके पास किताबें रहती थी उनकी कोट के अंदर। Then they were coming to Moscow and distributing these books. और फिर वो मॉस्को के अंदर आते थे और किताबें बांटते थे। For a few years they were going to Moscow. और ऐसे कुछ सालों तक वो मॉस्को जा रहे थे। Then police caught them. फिर पुलिस ने उनको पकड़ लिया। They were deported. और फिर उनको वापस भेज दिया। But they changed the passport लेकिन उन्होंने दूसरा पासपोर्ट बना लिया। and came again. Changed name and passport and came. नाम बदला, पासपोर्ट बदल लिया और फिर अंदर आ गए। They were very. तो बहुत उनका दृढ़ निश्चय था किताब बांटने के लिए। It was very like secret group. तो बहुत ही सीक्रेट तरीके का ग्रुप। No other devotees, they did not know what they are doing. तो और कोई भक्त नहीं जानता था कि भक्त लोग क्या कर रहे हैं। Because KGB has its eyes everywhere. KGB है, उसकी आंखें जो है वो हर जगह पर थी। So no devotees in the world, they knew what they are doing. तो पूरी दुनिया में भक्तों को पता नहीं था कि ये भक्त लोग क्या कर रहे हैं। Only Kirtiraj Prabhu, he was managing this group, he knew. केवल कीर्तिराज प्रभु को पता था कि वो मैनेज कर रहे थे सारी चीजें। So it was very dangerous. उस समय बहुत खतरनाक था। But devotees, they were very determined. लेकिन भक्त लोग थे बहुत डिटरमिन्ड थे। And after some time, this perestroika happened. The policy changed. लेकिन कुछ समय बाद पॉलिसी जो थी वो चेंज हो गई। So devotees, they approached new leader Gorbachev. भक्तों ने अप्रोच किया, वहाँ पे नया लीडर आया था। Gorbachev. He was first president of Russia. वो रशिया के पहले प्रेसिडेंट थे। Devotees approached him and he stopped this persecution. और भक्तों ने उनको अप्रोच किया और उन्होंने ये जो अत्याचार था भक्तों के ऊपर उसको बंद कर दिया। So from 1988, ISKCON was registered in Moscow. और 1988 में ISKCON रशिया में रजिस्टर हो गया। And from 1989, the first marathon started. और 1989 में पहला मैराथन शुरू हुआ। And 1992, Russia became #1 in the world. और 1992 तक आते रशिया पूरी दुनिया में नंबर 1 हो गया। In 1992, Moscow temple distributed 2 million books. और 1992 में रशियन टेम्पल ने 20 लाख किताबें बांटी। So Guru Maharaj, when he was coming from Russia to India, he was trying to inspire devotees in India. There in Russia, in the snow, in the heavy weather, they are distributing books, and here in India, you are doing nothing. तो महाराज रशिया से आते थे, भारत के भक्तों को प्रेरित करते थे। वो रशिया में इतनी ठंड में भक्त लोग इतनी किताबें बांट रहे हैं और यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। Because at that time in India, it was very less book distribution. उस समय भारत में बहुत कम डिस्ट्रीब्यूशन होता था। So he started to push devotees in India. अब महाराज ने सारे भक्तों को भारत में पुश करना शुरू किया। So after a few years in India, book distribution started to rise. और फिर भारत में डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ना शुरू हुआ और फिर बढ़ता रहा। Now India is #1. अभी भारत में पूरी दुनिया में नंबर 1 है। हरे कृष्णा महाराज का प्रणाम। महाराज जी मेरा क्वेश्चन है कि जब से मेरी दीक्षा हुई है तो ये नहीं कि बोलना चाहती कि मैं भक्त हूँ, मंदिर भी मैं संडे में ही आ पाती हूँ, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं चाहे वो सफर में हो चाहे सुबह 3 बजे हो, जैसे चैप्टर ग्रुप कोई बात बोलते हैं तो वो सच होती है महाराज। तो कुछ दिनों में अभी कुछ दिन पहले मुझे एक स्वप्न दिखा कि उसमें मैं अर्थे पे लेटी हुई हूँ लेकिन मैं जीवित हूँ। मैं कह रही मैं अर्थे पे क्यों लेटी हूँ, मैं तो जीवित हूँ। ये क्वेश्चन मुझे प्रभु जी डरा रहा, हालांकि मैं अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, बीमार चल रही हूँ, तो मुझे क्या समझना चाहिए, मुझे इसे सच समझना चाहिए
The question is that Mataji say I'm initiated, and sometimes I have dreams, and they often come true. And she saw a dream that she's lying on a funeral. So she's thinking, why I'm here? So often these things come true. So what should he? And maybe it is inspired by Chaitya Guru. So how should she deal with these kind of situations? We have different dreams. बहुत सारे सपने आते हैं. Sometimes we can become a king in our dream. कभी-कभी हम सपनों में जो है राजा बन जाते हैं. Sometimes we are in the funeral. और कभी-कभी हम लोग funeral में होते हैं. But most important thing is to always be absorbed in Krishna consciousness. सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमेशा कृष्ण भक्ति में absorbed रहना. Life can end at any moment. जीवन का अंत कभी भी हो सकता है. So we have to prepare for this. तो हमें तैयारी करनी होगी. And best way to prepare is to always chant Hare Krishna. और सबसे अच्छी तैयारी है लगातार हरे कृष्ण मंत्र का जप करना. To be engaged in practical service. और भगवान की practical सेवा में लगे रहना. So death will come at some point. मृत्यु तो कभी ना कभी जरूर आएगी. And like Dhruva Maharaj, जैसे कि ध्रुव महाराज है, when the death came, जब मृत्यु आई, he stepped on her head, तो उन्होंने मृत्यु के सर पे पैर रखा, and he boarded the spiritual aeroplane back to Godhead. और वो एरोप्लेन जो वैकुंठ धाम से आया था उस पे चढ़ गए. So for a devotee, death or life, it does not matter. भक्त के लिए जीवन में मृत्यु इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. Because now he is serving Krishna. क्योंकि अभी वो भगवान की सेवा कर रहा है. After death, he will continue to serve Krishna. मृत्यु के बाद ही भगवान की सेवा करना जारी रखेगा. So for him, death is just one step. तो मृत्यु उसके लिए बस एक स्टेप है. But we have to prepare. लेकिन हमें तैयारी करनी होगी. If we are always chanting Hare Krishna, busy with service to Krishna, we will not even notice that something happened, something fall down. We will just continue to serve. तो अगर हम निरंतर absorb रहते हैं, हमेशा chanting रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी चीज गिर गई, क्या हुआ. So it's like dress. जैसे कि ये ड्रेस है. We are taking out some dress and going. तो हम जो ड्रेस होता है वो निकाल देते हैं और फिर हम चले जाते हैं. So for a devotee, it's not such an important thing, death. तो मृत्यु भक्तों के लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं है. Just changing of a dress. बस ड्रेस का बदलाव है. Or if we are ready to go back to Godhead. और हम तैयार हैं अगर भगवान के धाम जाने के लिए. So we will not even notice that the body is already dead. तो हम ये नोटिस भी नहीं करेंगे कि हम शरीर से अलग हो गए. Thank you so much, Maharaj. Hare Krishna. कोई और प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी. प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि आपकी स्पिरिचुअल जो ये जर्नी है, इस जर्नी के पीछे का कारण बताइए. क्या रीजन है कि आप स्पिरिचुअल लाइफ में हैं? The question is, what's the reason you have come to spiritual life? When I was a small child, my father started to tell me about yoga. तो मैं जब बहुत छोटा बच्चा था, मेरे पिताजी ने मुझे योग के बारे में बताना शुरू कर दिया. He was not practicing yoga, but he had a small book on Hatha Yoga. लेकिन वो खुद प्रैक्टिस नहीं करते थे, लेकिन उनके पास एक किताब थी हठ योग के बारे में. And he was showing to me, see, this is yoga. और वो किताब मुझे दिखाते थे, कहते थे ये देखो योगा है. When I became 12 years old, और जब मैं 12 साल का हुआ, he brought me to cinema hall. There was a big movie, Indian yogis, who they are. तो सिनेमा हॉल में आए और देखा एक मूवी लगी हुई थी, इंडियन योगीज, who they are, कि भारतीय योगी ये लोग कौन हैं. He brought me one time, second time, third time. और फिर हम एक बार आए, 2 बार आए और 3 बार आए. It was a very interesting movie about different yogis. और ये बहुत अच्छी रुचिकर पिक्चर थी अलग-अलग योगियों के बारे में. So
when I was 20 years old, I saw the announcement on the board. It was said Bhakti Yoga, Purpose of Life, and the address where the class will be. और जब मैं 20 साल का हुआ तो मैंने वो अनाउंसमेंट देखा जिसमें लिखा था भक्ति योगा जीवन का उद्देश्य. So I came to Father. I said, "You was always telling me about yoga. So there is a class about yoga. Let's go." मैं अपने पापा के पास आया और उनको बोला कि आप हमेशा योगा के बारे में पूछते थे, तो आज मैं एक किताब देखा भक्ति योगा के बारे में. आप चलो हम लोग चलते हैं वहाँ पर. So it was wonderful class. बहुत अच्छी क्लास थी वो. After the class, devotees were chanting kirtan for 2 hours. क्लास के बाद 2 घंटे तक कीर्तन करते थे. And I said to Father, "Let us buy Bhagavad Gita." तो फिर मैंने निश्चय किया कि चलो भगवद गीता खरीदते. So we bought Bhagavad Gita. और फिर हमने भगवद गीता खरीदी. But I was going to the university to study, so Father said, "I will not give you this book because you will drop from the university." तो मैं यूनिवर्सिटी जा रहा था, पापा ने कहा ये किताब मैं तुम्हें नहीं दूंगा, अगर मैं दूंगा तो तुम पढ़ाई छोड़ दोगे. So I went to Moscow to study. और फिर मैं मॉस्को चला गया पढ़ाई करने के लिए. But I met devotees again. लेकिन वहाँ पर मैं भक्तों को मिला. And I joined. और फिर मैंने ज्वाइन कर लिया. By the mercy of devotees. भक्तों के आशीर्वाद. Devotees are very merciful. बहुत दयालु होते हैं. They are showing us the way. वो हमें रास्ता दिखाते हैं. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, you told that the public was in line to purchase books for half an hour. So it's very unimaginable even in India actually. And you told that it was the time this was happening. So can you please tell something about the current situation in Russia? How your teaching, how's the overall is going on there currently? Yes, preaching is going on. तो प्रश्न ये है कि आपने बताया कि लोग कतारों में लग के किताबें लेने के लिए आते थे, इतना उत्साह था जो कि अविश्वसनीय लगता है. तो अभी रशिया के अंदर क्या परिस्थिति है इसके बारे में? We are continuing to distribute books. लगातार अभी भी किताबें बांट रहे हैं रशिया में. This year I was distributing books in middle part of Russia. तो इस साल में रशिया के मध्य भाग में किताबें बांट रहा था. And I came to one office. The boss in this office, he bought the books from me 10 years ago. और फिर मैं एक ऑफिस पे आया जे बॉस पे और उसने मुझसे 10 साल पहले किताब खरीदी. Same boss was there. और वो सेम ही मालिक था अभी भी. And I showed him a book. I said, 10 years ago I gave you the book, so what is the situation now? और फिर मैंने उसको बोला कि 10 साल पहले मैंने तुम्हें ये किताब दी थी, तो अभी क्या परिस्थिति है? He said, I had very bad experience about these books. तो उसने बोला कि मुझे बहुत बुरा अनुभव हुआ है इन किताबों को लेकर. My son, his wife, his children, everybody became Hare Krishna devotees. मेरी वाइफ, मेरे बच्चे और उनकी वाइफ सब लोग भक्त बन गए उस किताब को पढ़ने के. But devotee who was with me, he recognized this person and they were friends many years ago. और मेरे साथ जो एक भक्त था वो एक का मित्र था बहुत साल पहले और उसने पहचान लिया उसको. So he spoke with him. और फिर वो उनसे बोले, उनसे बातचीत की. And he took one more set of books. और फिर उन्होंने एक और सेट ले लिया किताबों का. And when I came to Kartik, I met his son in Vrindavan. और जब कार्तिक महाराज यहाँ पर आए थे तो उनके बेटे को यहाँ मिले वृंदावन में. He is devotee, practicing. और भक्त है. So, preaching is going on. प्रचार इस प्रकार से चल रहा है. These books are very powerful. ये किताबें बहुत शक्तिशाली हैं. From one book you can get many devotees. एक किताब से बहुत सारे भक्त लोग बन सकते हैं. So we have to distribute books. हमें किताबें वितरित करना होगा. We have to teach people how to live by these books. हमें लोगों को सिखाना होगा कि किताबों के अनुसार कैसे जीवन जिया जाए.
Because many people, they are reading the books, but they don't understand how to live by these books. बहुत सारे लोग इन किताबों को पढ़ भी रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं कि इनके अनुसार जीवन को कैसे जीना है। So we have to have some educational programs to teach तो these हमें people. कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम्स चलाने होंगे इन किताबों को पढ़ने के लिए। Few days ago, I went with Amrita Gaur Prabhu to Deva college, something like college. तो एक दिन मैं गया था एक किसी कॉलेज में Deva Bandhu College. देशबंधु में कॉलेज है वहाँ पर गए थे महाराज डिवोटी के साथ। Deshbandhu, yes, Deshbandhu. And at the beginning there were 50 students in the audience. तो वहाँ पर ऑडियंस में शुरू में 50 स्टूडेंट्स थे। But then vice president of the college came. He was sitting for 10 minutes hearing. और फिर वाइस प्रेसिडेंट था कॉलेज का, वो आया 10 मिनट तक सुन रहा था। And he saw that not many students came. So he came out. तो उसने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट नहीं आए तो वो बाहर आ गए। And after 5 minutes, students started to come more and more, like 150 students. और फिर थोड़ी देर में वो और कई सारे लड़के अंदर आने लगे, बहुत सारे, धीरे-धीरे पूरा कमरा जो वो भर गया वो। And he has very nice presentation on his computer. He was projecting on the screen. और फिर बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हुआ प्रेजेंटेशन के साथ। And his preaching is so enlivening that everybody was participating. Nobody was sleeping. और इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, जीवन प्रेजेंटेशन दिया कि सब लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे, कोई सो नहीं रहा था। Then he gave to everyone Bhagavad Gita. और फिर हर एक को एक भगवद गीता दी। And he opened the third chapter. और फिर थर्ड चैप्टर खोला। And he explained from the verse 36 to 42 how to overcome lust. और फिर श्लोक संख्या 36 से 42 तक लेक्चर दिया कि लस्ट को कैसे ओवरकम किया जाए। He was asking students to read aloud verses. और स्टूडेंट्स को उन्होंने श्लोक बोलने के लिए कहा। They were opening the Bhagavad Gita and reading aloud. और फिर उस श्लोका को जोर-जोर से उच्चारण कर रहे हैं। And at the end he said that every one of you can purchase Bhagavad Gita. और फिर उन्होंने बोला कि आप सब लोग भगवद गीता खरीद सकते हैं। He gave them QR code and फिर एक QR कोड दिया सबको। And 90 students, they bought Bhagavad Gita. और 90 स्टूडेंट्स ने भगवद गीता खरीदी। And the teachers also were present in the audience. टीचर्स भी थे वहाँ पर। And they became so inspired. और वो इतने उत्साहित हुए इसको देखकर। And they said, from this week, you will come to our college every week. और इस हफ्ते से आप हर हफ्ते हमारे कॉलेज में आओ। Every week we will organize for you program. और हर हफ्ते हम आपके लिए प्रोग्राम की व्यवस्था करेंगे। So we have to educate people. हमें लोगों को एजुकेट करना होगा। Because everyone in India knows about Bhagavad Gita. क्योंकि भारत में हर कोई जानता है भगवद गीता। But they have no idea what to do with this Bhagavad Gita. लेकिन उनको कोई ज्ञान नहीं है कि भगवद गीता के साथ क्या करना है। So we have to explain them practical application of this knowledge. तो हमें उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि प्रैक्टिकली कैसे इसको अप्लाई करना है। Yes. महत्व है या नहीं है? What if we chant without beads? Would it have any? Would it be of any use or not? मतलब कि अगर माला पे जप करने का ही महत्व है या बिना माला के हम गृह कार्य करते हुए हरे कृष्णा हरे रामा का जप करते हैं तो उसका भी कुछ महत्व है? Is he asking while doing household duties, if we chant Hare Krishna, would that be fruitful? Chanting of Hare Krishna is always useful. Hare Krishna का जप हमेशा फलित होता है। We can chant when we are cooking. जब खाना बना रहे हैं तो हरे कृष्णा जप कर सकते हैं। We can chant when we are cleaning the room. जब हम सफाई कर रहे हैं तो हरे कृष्णा जप कर सकते हैं। We can chant all day. हम पूरे दिन जप कर सकते हैं। But 16 rounds, it's Srila Prabhupada said that one who is every day
chanting 16 rounds and following 4 regulative principles, at the end of life he will come back to Godhead. लेकिन अगर हम 16 माला रोज जप करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं, तो जीवन के अंत समय में हम भगवान के धाम आएंगे. So we can chant all day, but we have to also chant 16 rounds. लेकिन हमें 16 माला जो है, माला के ऊपर भी जप जरूर करना चाहिए. ठीक है, तो इसी के साथ हम विराम देते हैं. आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, ध्यानपूर्वक सुना, और हम महाराज जी का बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे. एक बार हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण के द्वारा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो आज का प्रसाद जो है